All right. So just a bit of clarity on Seva. When it comes to, service is simply whatever you have in excess, you share it with others. Right? So there is a saying, sharing is caring. Right? You would have all heard of it. Sharing is caring. But the statement is not complete. Sharing is self-caring. Okay. So people think when you share with others, you care for others. No. When you share with others, you care for yourself. Because you care for yourself, you are sharing to others. Sharing is self-care. The more you share, the more yourself feels joy. So it is a self-care. Okay. And any kind of donation you are giving, it's not for another person. It's for yourself. It's for your joy. It's your dharma. It's your duty. You are giving it for your own punya, for your own soul satisfaction. And yes, when you are giving it to an individual, you should make sure that that individual is not dependent on you. But you can give it to organizations. You can give it to spiritual organizations or any organizations which purely run on the basis of philanthropic support and charity. Only when you are supporting individuals, you should be careful not to make them dependent. Okay. Yes, Nita. तो फ्रेंड्स सर बता रहे हैं कि जैसे हमने कल देखा कि जो भी हमारे पास अधिक मात्रा में है उसे हमें शेयर करना चाहिए, क्योंकि शेयर करने के लिए आपको साहस की जरूरत होती है, आपको उतना समय या अपना चीज निकालनी पड़ती है। और हमेशा लगता है कि जब हम शेयर करते हैं तो हम दूसरों का ख्याल रख रहे हैं, इसलिए शेयर कर रहे हैं। तो शेयर इज केयरिंग को अगर हम सही तरीके से समझें तो शेयरिंग इज सेल्फ केयरिंग, क्योंकि हम दूसरों को देते हुए प्रतीत होते हैं पर हम खुद को ही सपोर्ट कर रहे हैं। जितना आप ज्यादा शेयर करेंगे उतनी ज्यादा खुशी पाएंगे और उतना ही ज्यादा आत्मा आनंद में जाएगी। और अगर आप डोनेशन दे रहे हैं तो ये दूसरों के लिए नहीं, अपनी खुशी, अपने पुण्य, अपने धर्म और अपनी ड्यूटी के कारण दे रहे हैं, अपनी आत्म संतुष्टि के लिए दे रहे हैं। पर याद रखिए जब भी आप डोनेशन दें तो यदि किसी इंडिविजुअल आदमी को दे रहे हैं तो ध्यान रखें कि वो आपके ऊपर डिपेंड मत हो। इससे अच्छा है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में मदद कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन हो, आध्यात्मिक हो या कोई भी हो, पर वो दूसरों को सपोर्ट और एम्पावर करने के लिए ही काम करती हो, ये ध्यान रखें। थैंक यू। Okay. So yesterday we have discussed a lot about the nature of the soul, the qualities of the soul. So fundamental quality of the soul is dissatisfaction. So curiosity goes in hand with dissatisfaction. That is the very nature of the soul. And the soul constantly seeks satisfaction. The soul makes every effort. The soul seeks satisfaction in every form. Satisfaction physically, satisfaction emotionally, satisfaction intellectually, satisfaction spiritually, satisfaction socially, and satisfaction on ego inflating affairs. So, physical satisfaction. Example, physical satisfactions. You feel like eating ice cream. You feel like eating a chocolate. You want to go for a massage. It gives you a lot of physical satisfaction. You want to eat tasty food or all kinds of bodily pleasures. The soul seeks it. Okay. Every kind of bodily pleasure, the soul seeks it. And there is nothing wrong in it. As long as, see, satisfactions, your satisfactions are fulfilled when your desires and needs are fulfilled.
When your needs and desires are fulfilled, you feel satisfied. So there is nothing wrong in fulfilling your needs and desires as long as it is in a balance, as long as it is within the limits, as long as you are not overdoing it. Eating one ice cream to feel good is okay, perfect. Eating two ice creams, still okay. But if you eat three ice creams, then it's not okay. Four ice creams, definitely not. So, any kind of physical satisfaction, the soul constantly seeks, and it is perfectly okay to do it as long as it is within the limit. Okay. Similarly, emotional satisfactions. We all seek emotional satisfaction from others. We all seek friendship, emotions of friendship and relationship. We all seek, and we all seek somebody to understand us. We want, when we are going through some kind of a trouble or when we feel low, we want somebody to say it's okay. We want somebody to pat on of us. Emotional satisfaction. So many emotions are there. So the soul seeks all kinds of emotional satisfaction. Somebody loves you, you feel good. Somebody likes you, you feel good. Somebody says you are beautiful, you feel good. Somebody says your smile is so beautiful. Somebody says you are sexy, you feel good. Emotional satisfaction. And also intellectual satisfaction. The examples of intellectual satisfaction be you read a good book, intellectually you are satisfied. You're attending this Zoom session, there is a lot of satisfaction intellectually. And you are debating spiritual debates, you are sharing your understanding, then intellectually you feel satisfied, right? So everything is important. So the most important point to understand is emotions and feelings are very, very important. Small emotions, small feelings are very, very important because the soul seeks it. And then socially, yes, we want a good social status, right? We want to be in a commune. The soul seeks to be in commune. Sangam, Sangam Saranam Gacham. That's what Buddha said. Buddha said. The soul seeks the Sangha, like-minded people. The soul wants to be with the like-minded people. Instead of you eating the food alone, you want to share the food with others, and you want to eat their food so that you all share and enjoy. Go for parties, go for outing, nature walks, play games, social satisfaction, cooking together, playing together, cracking a joke, laughing together. So these are all social satisfactions. Okay. And ego inflating satisfactions. Somebody says you did a great job. And somebody says, Neetaji, you have done so great work. So many people have benefited because of you. Internally, you feel so good. Yes, I did a good job. So that's the ego inflating, which is good. The soul seeks it. There's nothing wrong in it. But don't overdo it. Don't seek more and more. If it comes naturally, the soul seeks it. So when you get it, grab it. Naturally, somebody is giving a compliment. Enjoy that moment. Grab that moment. Don't miss that opportunity. Feel good because the soul rejoices. You feel happy. But some people, unfortunately, they have this programming. No, we should not take any compliments. Somebody says, you have done a great work. No, I did nothing. So they reject that satisfaction. So it is very important that you enjoy all kinds of satisfactions and spiritual satisfaction. The only true satisfaction is the spiritual satisfaction. Because when you understand
when you understand when you understand the spiritual science, when you understand the nature of the soul, then you are spiritually satisfied. You are spiritually satisfied that the soul can never get satisfied. When you understand the soul journey, there is a spiritual satisfaction. When you learn the science of meditation, there is a spiritual satisfaction. Okay. Any kind of spiritual concept gives you certain spiritual satisfaction. Any spiritual science topic gives you spiritual satisfaction. So these are the satisfactions the soul keeps longing for, earning for. So the most important point to remember is small things matters in life. You have to underline. Small satisfactions, small joy matters in life, because when it comes, don't miss the opportunity, because the very nature of the soul is dissatisfaction. So that moment temporarily you feel satisfied, grab it, enjoy it, totally live it. If somebody gives you a surprise, that matters, that counts for the soul. Small surprises counts for the soul. Small satoris, satori means, it's a Japanese word. Satori means a moment of awakening or understanding. It is called satori. Awakening, understanding. You feel a certain satori. So the satori matters. For the soul, it counts. So the most important point to understand when it comes to the understanding of the soul science is the soul is, the very nature of the soul is dissatisfaction. The soul always remains in dissatisfaction. So because it remains in dissatisfaction, the soul seeks satisfaction. And the satisfaction comes temporary. Whatever the soul is seeking, the satisfaction comes, but it stays very temporary. Again, the dissatisfaction begins after some time, after a few days, after a few years. Again, the dissatisfaction comes. Again, the soul starts seeking it. So this is a constant cycle, eternity. So the wisest thing to do is enjoy the present moment. Small satisfactions matters. It is to seek this satisfaction the soul has come to the planet Earth. So don't miss it. Small things matters. Have a smile on your face. That matters. Friendship matters. Smile is an ambassador of friendship. When you see somebody, have a smile at them. That smile becomes an ambassador of friendship. Okay. So every sensation counts. Small sensations count. You put your arms on somebody, you hug somebody. It's a small gesture. It's a sensation. But that counts because the soul feels satisfied. So hugs are important. Surprises are important. Small miracles are important. So this is the most important thing. So when this, only an enlightened person can enjoy the small things, because an enlightened person doesn't want to miss any opportunity. So that small satisfaction is a great satisfaction for him, because he knows the soul is always dissatisfied. So this moment somebody is hugging, so I feel good, I feel satisfied, I celebrate. Somebody is giving a gift, I feel surprised, so I totally enjoy. You see a kid, when you give a gift to a kid, the kid is so much in surprise. The kid celebrates such a beautiful smile. The kid is jumping with joy, with a surprise. So this matters. Okay. Okay. सर ने कहा कि जैसे कि हमने कल समझा था कि आत्मा हमेशा असंतुष्ट रहती है, और जो उसकी जिज्ञासा, उत्सुकता है, वो इसके साथ साथ चलती है। सोल हमेशा कोशिश करते रहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि पाए, और वो सेटिस्फैक्शन हर लेवल पे चाहती है, फिजिकली भी,
इंटेलेक्चुअल बुद्धि के तौर पे भी, इमोशनल भावनात्मक तौर पे भी, और आध्यात्मिक तौर पे भी, और सामाजिक तौर पे भी, हर एक को। और अपने ईगो को जो उसको बढ़ाता है जो चीजें, वो भी वो इंजॉय करती है और सेटिस्फैक्शन के लिए उसको ढूंढती है। जैसे फिजिकल के लिए उन्होंने कहा कि जो भी हमारी शरीर की इच्छाएं हैं, चाहे स्वादिष्ट भोजन हो, चॉकलेट हो, या कोई अच्छी चीज खाने की या पहनने की हो, तो जो भी चीज आप शरीर के लिए यूज करते हैं, उसके प्लेजर को आप बिल्कुल गलत मत समझिए। कुछ भी चीज गलत नहीं है, क्योंकि हमारी छोटी छोटी डिजायर, हमारी जरूरतें हमको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती हैं, सेटिस्फैक्शन देती हैं। तो इन सब चीज का अपने जीवन में भरपूर भरपूर यूज करना चाहिए, पर इसको हर चीज को सीमित मात्रा में करना चाहिए। कभी भी इसकी अति नहीं करना चाहिए। अगर आपका मन हो रहा है एक आइसक्रीम खाने का, तो बिल्कुल खाइए, अगर दूसरा भी खा लिया तो कोई बात नहीं। तीसरा आपकी अति की तरफ ले जाता है, चौथा आपको वाकई पूरा ग्रीड में ले जाएगा, और वो आपके लिए अच्छा नहीं है। सर वो वही कह रहे हैं कि कोई भी चीज आप अपने शरीर के सुख के लिए कर रहे हैं, चाहे फिर वो खाने के लिए करो, या पहनने ओढ़ने के लिए, या अपने सेक्सुअल के लिए करिए, जो भी आप करते हैं शरीर की सुख के लिए, उसको हमेशा हर चीज को लिमिट में ही करना है। और ऐसे ही जैसे फिजिकल नीड हमारी रहती है, वैसे ही हमारा इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी हमारी आत्मा चाहती है। हम फ्रेंडशिप चाहते हैं और फ्रेंडशिप ढूंढते हैं। हमको कोई, अगर कोई हमको ट्रबल होता है, कोई परेशानी होती है, या हम लो फील करते हैं, तो हम अपने फ्रेंड के पास जाएं और वो फ्रेंड हमको सांत्वना दे। और बहुत सी चीजें हैं ऐसी जिससे हम इमोशनल सेटिस्फैक्शन दूसरों से पाते हैं। जब कोई आपको प्यार करता है, जब कोई आपको लाइक करता है, जब कभी आपको कोई ब्यूटीफुल करता है, या कहता है कि आपकी स्माइल अच्छी है, तो ये आप इमोशनली सेटिस्फाइड होते हैं। इसमें भी कुछ बुरा नहीं है। इंटेलेक्चुअल तौर पे भी हम जब सेटिस्फाइड होते हैं, जब कोई हम अच्छी बुक पढ़ते हैं, जूम में जाके जब हम बौद्धिक ज्ञान को लेते हैं, या स्पिरिचुअल डिबेट करते हैं, या अपनी कोई चीज को शेयर करते हैं, तो हमको संतुष्टि मिलती है। ये सब इम्पॉर्टेंट है। फीलिंग और इमोशंस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आत्मा के लिए, क्योंकि आत्मा इन सब को महसूस करने के लिए ढूंढती है। आप सोशल सेटिस्फैक्शन भी अगर लेना चाहते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आत्मा अकेले नहीं रहना चाहती, वो एक समुदाय, कम्युनिटी में रहना चाहती है। जैसे कि संगम शरणम गच्छामि थे के बारे में हम जानते हैं कि सभी एक ट्रूथ सीकर लोग एक साथ जब चलते हैं, तो उनमें एक सेटिस्फैक्शन और प्रेम भी रहता है। अगर आप अकेला खाना चाहे खाना जब आप अकेले खाने के लिए बैठे, तो आपको उतना एंजॉय नहीं करेंगे जितना आप बांट कर खाने में आपको अच्छा लगेगा। आप इन सब चीजों का अपने जीवन में एक हिस्सा रखें, कि आप पार्टीज भी जाएं, प्रकृति की गोद में भी जाएं, गेम्स भी खेलें, साथ में मिलके आप लोग कुकिंग करें, हंसें, जो एक दूसरे को सुनाएं। ये सब सोशल सेटिस्फैक्शन है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। एक हमारा होता है जो हमारे ईगो को सेटिस्फाइड करता है। जैसे कोई कहता है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो ये सब चीजें जब हमारे अपने अच्छे कामों के कारण हमको शाबाशी दी जाती है, तो हम खुश होते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा ये चाहती है। पर कभी भी इसको ज्यादा पाने के लिए कोशिश न करें। जो स्वाभाविक रूप से आ रहा है उसे विनम्रता पूर्वक आप लें, पर प्रयास न करें उसके लिए अथक कि आपको ये क्रेडिट मिले। कोई भी जीवन के अवसर को मिस मत करें। जो भी खुशी का क्षण आ रहा है उसको हमको लेना चाहिए। कई लोग होते हैं जो अपनी प्रशंसा या अपनी शाबाशी लेना नहीं चाहते, उसे रिजेक्ट कर देते हैं। यदि कोई कहता है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो या कुछ, तो वो बोलते नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर रहा हूं। ये रिजेक्शन गलत है। आपको सभी सेटिस्फैक्शन चाहिए, क्योंकि आप आत्मा है। तो आप अगर कोई प्यार से आपको कोई प्रशंसा या कोई अच्छा कमेंट कर रहा है, तो उसको भी लेना चाहिए। स्पिरिचुअली जो सेटिस्फैक्शन होता है, वही सबसे सच्चा सेटिस्फैक्शन होता है। जब आप स्पिरिचुअल साइंस समझते हैं, जब आप आत्मा का स्वभाव समझते हैं, जब आप समझ जाएंगे कि ये आत्मा की जर्नी किस प्रकार होती है, मेडिटेशन का साइंस क्या है, और किस तरीके से मेडिटेशन हमको अपने आत्मा से जोड़ता है, ये जब सब कुछ आप जान जाएंगे, तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। कोई भी स्पिरिचुअल साइंस आपको स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन देता है,
और आत्मा इसके पीछे भागती है। तो जीवन के हर छोटी बड़ी चीजें, सभी चीजें बहुत मैटर करती हैं। किसी भी अवसर को बिल्कुल न छोड़ें। एक एक क्षण में जो भी चीज आ रही है उसे आप तुरंत लें और उसको एंजॉय करें। अगर कोई सरप्राइज देता है तब भी आप उसको स्वीकार करके उसमें खुशी का अनुभव करें। जैन में एक सटोरी वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कि मोमेंट, जागरूकता का क्षण या समझ का क्षण। ये सतोरी बहुत मैटर करता है क्योंकि आत्मा ये सब चीजें काउंट करती है और इसमें आनंद पाती है। और सोल साइंस के अंदर में जो नेचर ऑफ डिससेटिस्फैक्शन है, असंतुष्टि के कारण ही आत्मा इसको ढूंढती है। जो भी चीज बाहरी दुनिया से मिलता है वो अस्थायी होता है। वो कुछ दिन का, कुछ वर्षों का या कुछ महीने का हो सकता है और फिर वो खत्म हो जाता है। फिर आत्मा अपनी खुशी के लिए ढूंढना शुरू करती है। पर सबसे अच्छा काम है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहें। जो भी चीज इस क्षण में आपके पास आ रहा है उसको एंजॉय करें। यहाँ तक कि आप अपने चेहरे पर एक एंजॉय भी, जब स्माइल भी रखते हैं तो वो भी बहुत मैटर करता है। क्योंकि स्माइल को हम कहते हैं कि दोस्ती का एम्बेसडर है वो। तो जो भी स्मॉल सेंसेशन यानी कि संवेदनाएं हैं हमारी, चाहे कोई हमारा मित्र या कोई भी लव्ड वंस हमको हक करता है, अपने बाहों में भरता है, वो एक छोटा सा ही गेस्चर है, पर वो हमारे को सेटिस्फैक्शन फील कराता है और ये सब हमारे जीवन में मायने रखते हैं। सरप्राइजेस, छोटे छोटे मिरेकल्स, जो भी चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। किसी से भी आपको भागना नहीं है। एनलाइटेंड पर्सन हमेशा ऐसे छोटे छोटे अवसरों को भी नहीं चूकता। वो हर अवसर का फायदा उठाता है क्योंकि वो जानता है कि इन सब छोटी छोटी चीजों से भी मेरी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। फिर चाहे कोई एक हग हो, गिफ्ट हो, कोई सी भी चीज हो, वो इंजॉय करता है। आप बच्चों को देखिए, जब उनको गिफ्ट दिया जाता है तो वो खुशी से कूदते हैं क्योंकि वो उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। ये जॉय है जो हमारी आत्मा को सेटिस्फाइड करती है और ये हमारे लिए बहुत मायने रखती है। थैंक यू सर। So it is important that you count only your satisfactions. You discount the dissatisfactions because that is the very nature of the soul. So don't count your dissatisfactions, count your satisfactions in life. That is very important. Focus on the satisfactions. Focus on small, small things. As it comes, when it comes, grab it, enjoy that totally. Count on the satisfactions. And the more you understand, this is an important point, the more you understand the nature of the soul, which the nature of the soul is dissatisfaction, the more you understand it, the more you come out of the self-inflicted suffering. You underline the word self-inflicted because suffering in your life is always self-inflicted. You suffer because of your own ignorance. You suffer because of your own lack of awareness, knowledge, wisdom. You suffer because of your own lack of understanding of life. So, suffering is self inflicted. The reason I said it's very important is because people think that you are suffering because of somebody. You are suffering because of your husband, you are suffering because of your wife, you're suffering because of your in laws, you're suffering because of your parents. You always tend to, the ignorant people always tend to blame others, but they fail to understand that the suffering is self inflicted. If you are suffering in life, that simply means that suffering is self inflicted. Self inflicted means you have caused that suffering for yourself because of your lack of understanding. Pain, everybody goes through pain. Every human goes through pain in life. But suffering is self inflicted.
Pain is different, suffering is different. Pain is momentary, and pain relates to the body. Suffering is you keep on repeating the story in your mind. You keep on thinking that that person has hurt me, this person has hurt me, this injustice has happened to me, that injustice has happened to me. How can they speak like that to me? My ego got hurt. So it is all self-inflicted. The more you understand the nature of the soul, the more you come out of the self-inflicted suffering. It is a very deep subject. And the more you meditate, the more you listen to the spiritual science subjects, the more you read books, the more you contemplate in silence, the more you are in nature, the more you come out of that self-inflicted suffering. Your suffering, only you can come out of it. Nobody can take you out from that suffering. Your own suffering, only you can come out of it because it is created by you. It is inflicted by you. Only you can come out of it. Others are just a reflection or a trigger. They never inflict. Others never inflict suffering. Suppose somebody says you are an idiot. You feel bad. You feel hurt. But you yourself know that you are not an idiot. Then why do you care for others' words? You suffer because you care for others' words. Suppose your partner says you are not loving, you are not fit for the relationship. Then you feel bad, you suffer. I'm so sensitive, I'm so loving, I do so much, I take care of the whole family, but still I go through this. Why I should go through this torture? This is all self-inflicted. This is all inner voice. But if you understand, okay, that fellow is saying something because he's dissatisfied and nobody can satisfy him. So this is the truth of the dissatisfaction. Nobody can satisfy you. You write it in bold letters. Nobody can satisfy you. Nobody can satisfy you. You cannot satisfy yourself. Nobody can satisfy you, and you also cannot satisfy yourself. And circumstances also cannot satisfy you. No circumstances can satisfy you. And future also cannot satisfy you. Present also cannot satisfy you. So this is the nature of the soul. So when you understand this, and when somebody is saying certain painful words, of course, the words can be painful. When somebody says certain painful words, you simply have compassion that poor fellow is dissatisfied. Nobody can help him. Only he has to help himself by doing meditation and understanding the spiritual science. Then it's just nothing. The suffering is no more there. So, another nature of the soul is always selfish. The soul cares about only itself. The soul is least bothered about others. The very nature of the soul is selfishness. And selfishness is nothing wrong. Selfish simply means you take care of yourself first. That's all. Your first priority is yourself. If you want to be happy, you have to work for it. You cannot give happiness to another person. Similarly, you cannot give suffering to another person. So it needs a lot of awareness. It's a regular practice of meditation. The more you regularly practice meditation, the more regularly you become aware of these small, small things. Suffering is self-inflicted. This is the point to remember. So whenever you suffer, you understand that it is self-inflicted. If you are suffering in the relationship, then you understand it is your problem, not the other person's problem.
With this simple understanding, all relationships becomes beautiful. In every relationship, if you are suffering, whether it is a brother, sister, or sisters, or father, son, mother, daughter, husband, wife, any kind of relationship, if you are not, if you are suffering in that relationship, you understand that it is self-inflicted. It is self-inflicted because you don't know how to handle it. You don't have the understanding of it. You don't have the understanding of the very nature of the soul. So rather than focusing on others, focus on yourself. That is the key. That is the secret. Focus on yourself. Don't focus on others. Okay. So with this, we'll conclude this session, and more to go, more interesting things to come. We'll continue tomorrow. Thank you very much. Neetaji will translate. Thank you very much. Namaste to all. थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर ने कहा है कि सबसे ज्यादा हम अपने सेटिस्फैक्शन, जो भी जिस चीज में हमको संतुष्टि मिल रही है, उसको हम देखें और गिने। पर अक्सर ऐसा होता है कि सभी लोग अपनी असंतुष्टि जो जीवन में मिलती है उसको गिनते हैं कि वो ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जबकि हमको अपना पूरा फोकस अपने सेटिस्फैक्शन पर रखना चाहिए। जो भी छोटे छोटे खुशियां अवसर आते हैं, हमको तुरंत उसको लेना चाहिए और उसको एंजॉय करना चाहिए। जितना ज्यादा आप इस चीज को समझते जाएंगे, उतना ही आप अपने सेटिस्फैक्शन को ले पाएंगे। जितनी भी सफरिंग होती है वो हमारी स्वयं की बनाई हुई होती है, अज्ञानता के कारण होती है और स्वयं पैदा की हुई होती है, जिनको जीवन की समझ नहीं है। आप लोगों को कई बार परेशानी होती है कि हस्बैंड अच्छे नहीं है, या इन लॉज अच्छे नहीं है, या वाइफ अच्छी नहीं है। हमेशा हम कंप्लेन करते रहते हैं, ये हमारी अज्ञानता है, क्योंकि सफरिंग हमारी खुद के द्वारा बनाई गई है। आप सफर कर रहे हो क्योंकि आप आत्मा को नहीं जान पा रहे हो। आपने ही इस पेन को, मतलब इस सफरिंग को लिया है। पेन सबको होता है, दर्द सबको होता है, ये ह्यूमन का स्वभाव है। क्योंकि पर जब जब सफरिंग की लिए बात करता हूं तो वो हमारी खुद की बनाई हुई होती है। पेन हमारा क्षणिक होता है, अस्थायी होता है, बॉडी के लेवल पे होता है। पर सफरिंग हमारे माइंड में, जो हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे ईगो को हर्ट करा, हमको ऐसा क्यों बोला, जो भी मानसिक रूप से हमको पीड़ा होती है, उसको हम सफरिंग कहती हैं। जबकि पेन सिर्फ शारीरिक तौर पे होता है। तो पेन और सफरिंग का सर डिफरेंस बता रहे हैं। तो आप अपने नेचर समझें सोल की, कि आप ये जो सफरिंग है वो आप खुद पैदा कर रहे हैं। इसको मेडिटेशन के द्वारा और स्पिरिचुअल साइंस को अच्छे से समझने के द्वारा, बुक्स को पढ़ने के द्वारा, चिंतन के द्वारा, प्रकृति के पास जाने के द्वारा इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, और जानेंगे कि कुछ भी सफरिंग जैसी चीज नहीं है। जो भी चीज हम सफर बोल रहे हैं वो हम ही उसको क्रिएट कर रहे हैं। दूसरे केवल हमारे लिए ट्रिगर या एक रिफ्लेक्शन मात्र है। क्योंकि जो चीज हमारे में कमी होती है, हम दूसरे हमको वो बताते हैं, या हमको कोई जो हमारा इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं उस वुंड को वो ट्रिगर करके हमको बताते हैं। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन है वो, या तो मिरर या ट्रिगर है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि कोई लड़का कह देता है कि तुम बेवकूफ हो, तो तुमको बुरा लगता है, जबकि तुम जानते हो कि तुम बेवकूफ नहीं हो, तो फिर उनकी परवाह क्यों कर रहे हो। या कभी आपका पार्टनर कह देता है कि तुम बहुत लविंग नहीं हो, हमारे रिलेशनशिप आपके तुम्हारे कारण अच्छे से नहीं हो रहे हैं, तो तुम अपने में बस यही मन में बड़बड़ाने लग जाते हो, या माइंड में थॉट लाने लग जाते हो कि मैं इतना केयर कर रहा हूँ, मैं इतनी सब कुछ कर रही हूँ, मैं सेंसिटिव हूँ, फिर मुझसे ऐसा फिर बोला क्या, जबकि आप जानती हैं कि आप ये सब कर रही हैं। ये आपकी अंदर की इनर वॉइस है, अंदर की आवाजें हैं। आप बल्कि ये समझिए कि यदि कोई सामने आपको अपमानित कर रहा है या कोई अपशब्द बोल रहा है, तो समझ लीजिए कि वो असंतुष्ट है, उसकी सोल असंतुष्ट है। कोई दूसरे को, आप उसको संतुष्ट नहीं कर सकते, तो कोई कोई आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता। आप स्वयं को भी सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ऐसा है। तो जो भी सिचुएशन, जो भी चीजें हो रही है हमारे साथ, उसमें आप सफरिंग मत करिए।
प्रेजेंट मोमेंट, अब यहाँ पे मेरा एक सेंटेंस छूट गया, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, कुछ प्रेजेंट मोमेंट और जो भी चल रहा है उसी को ही इंजॉय करना है, ऐसा कुछ है। अगर कोई पेनफुल वर्ड्स बोल रहा है तो बस इतना समझिए, पुअर फेलो, वो मेडिटेशन नहीं करता है, वो कुछ नहीं जानता है। और आप मेडिटेशन करिए और सफरिंग से दूर हो जाइए। आत्मा का स्वभाव है स्वार्थी होना, सेल्फिश। हम आत्मा दूसरों के लिए नहीं सोचती, वो पृथ्वी पर भी आई है तो अपने लिए। अपना ख्याल आप खुद रखिए। आप अपने जीवन में सबसे प्राथमिक तौर पर आप ही हैं, प्रायोरिटी अपने आप को दीजिए और अपने ऊपर ही काम करिए। आप दूसरों को संतुष्टि देने के लिए दूसरों को आप हैप्पीनेस नहीं दे सकते। बस आप रेगुलर मेडिटेशन करिए और इस चीज के लिए आप जागरूक बने रहिए हमेशा कि सफरिंग मैंने स्वयं पैदा की है। कोई भी रिलेशन आपका प्रॉब्लम यदि है तो आप समझ लीजिए कि इसे रिलेशनशिप के तौर पे भी समझ सकते हैं कि हर प्रॉब्लम आपकी खुद की द्वारा बनाई हुई है। अगर आप अपने हर रिश्ते को अच्छे से समझ लेते हैं तो हर रिश्ता हर फ्रेंडशिप आपकी बहुत ही खूबसूरत है। फिर वो रिश्ता चाहे भाई बहन, माता पिता, बच्चों, किसी के साथ भी हो, सभी रिश्ते बहुत खूबसूरत हैं। बस ये सफरिंग जो उनके लिए हम कंप्लेन करते हैं या उनसे हम सेटिस्फैक्शन चाहते हैं या उनसे हम वैलिडेशन चाहते हैं या जो भी समझ लीजिए, प्रेज पाते हैं, हम चाहते हैं अप्रिसिएशन पाते हैं, जो भी पाते हैं वो सब हमको संतुष्ट नहीं कर सकती हैं। ये सफरिंग जो मैं ले रहा हूँ कि मुझे एक्सपेक्टेशन है और मुझे नहीं दे रहे हैं, तो ये जो हम सफर करते हैं ये हमारी स्वयं की बनाई हुई है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो अपनी आत्मा को समझ लेंगे और अपने आत्मा को ही समझने के लिए पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, दूसरों को नहीं। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स।